fourth practical, which is determination of melting points of solid organic compound. In this practical, first of all, we will set the separators, the stand, thermometer, and the beaker, and the separate lamp. For this preparation of this apparatus, we will first of all concentrate on the adjustment of this instrument in proper way. After that adjustment, we will introduce organic compound and sulfuric acid in it with some interval of some time, and then we will start heating on this separate lamp. After heating, we will introduce this thermometer, which will give us the reading of this temperature of this melting point of this respective organic compound. So we will know the different organic compound we introduced to the practical, which is glucose. Glucose 4 degrees centigrade. So our main aim of this practical is to measure the melting point of different organic compound in the lab. So today our fourth practical is going to perform the different student group, which will be shown in the video. हम जो है ना मेल्टिंग पॉइंट ऑफ माल्ट और ग्लूकोज बेंजोइक एसिड या नेपथलीन इसका मेल्टिंग पॉइंट मालूम करने का जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने नेपथलीन लिया और उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड लिया। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 994 सेंटीग्रेड है और उसके साथ बनाने के लिए हमने इसको हीट देना शुरू किया और उसके अंदर थर्मोमीटर लगा के अभी हम वो इसकी मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन कर रहे हैं।